I am delighted to be here and grateful for an opportunity to share India's perspective on the global issues and exchange ideas on IVB can collectively work towards the better future. India has always been a promoter of the peaceful constitution and mutual respect for different culture and beliefs. Ever assert wisdom of the Vasudev Kutumbakam, the word is the family, guide us and in our interaction with the global community. We formally believe that we must work together to create a more equitable and sustainable and peaceful world. The micro, small and medium enterprises, MSME, is a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy with the over 6.34 crores units, providing the employment to 11 crores plus people having around 30% share of the GDP and 46% of the export. Is the country prior to the retails, it is the high growth path. The role of the MSME sector in the driving the growth engine become even the more important. MSMEs in the India are the typically characterized by their agility, flexibility, and innovation, making them the ideal partners for the foreign companies looking to establish the foothold in the Indian market. Today, MSMEs in the India have more opportunities to get into the joint venture or licensing partnership, etc., with the companies across the world. Indian government has simplified the regulatory and administrative process involved in the setting up and operating a business in the India. This concludes the reducing the number of the permitted require streamlining and approval processing and improving the ease of doing the business in the country. Joining with the micro, small and medium-sized enterprises in the India can offer main advantage to the foreign investment, including the local knowledge and expertise, the cost effectiveness, access to the network and resources, flexibility and innovation, and complies the risk management. I am delighted to see entrepreneurs and dignitaries, experts of around the world are participating in this third edition of the International SME Convention 2023, and I urge them to take utmost the benefit of the occasion. I hope to see many MMC collaborating and forming joint venture with the companies across the world, which will be increase in the export, employment and production, and overall the help in the increasing the GDP of our country. Jai Hind. NSIC is surging ahead with the vision of Government of India towards Make in India, Digital India and Skill India by the way of aiding, promoting and fostering MSMEs. NSIC is continuously strengthening MSMEs for more than 6 decades by providing marketing, technology, credit and other support services. सब लोगों ने देखा होगा जिस समय देश में कोरोना
काल की स्थिति चल रही थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस कोरोना काल में किस तरीके से पूरे देश को उभारने का काम किया, पूरे देश को बचाने का काम किया। क्योंकि मैं जानता था कि विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही, क्योंकि उनकी जो सोच है वो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है। उनके लिए भारतवर्ष ही नहीं बल्कि वो पूरे विश्व के लिए चिंता करते हैं। कोरोना काल के समय, जिस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था, क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज की स्थिति में अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज हम सब लोगों को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कहा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के MSME सचिव राकेश सचान जी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने के लिए उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वहाँ आयोजित की थी, जिसमें हम सब लोगों ने देखा कि उन्होंने जो लक्ष्य पहले रखा था उस लक्ष्य को कम से कम 3 बार बढ़ाना पड़ा। पहले लक्ष्य उन्होंने 10 लाख करोड़ का रखा था, लेकिन वहाँ की सारी स्थितियों को देखते हुए हमारे उद्योगों को लगा कि शायद हम उत्तर प्रदेश में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कायम करने के लिए जो बड़ी एक समिट के माध्यम से जो इन्वेस्ट पैसा हुआ है, करीब 33 लाख करोड़ से लगभग हुआ है, निश्चित आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का भार सौंपा है वो शीघ्र उसे पूरा करेगा। और निश्चित आने वाले समय में जिस तेज़ी के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, उसे हमें लगता है कि निश्चित आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य दिया है उसे भी हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। मैं जानता हूँ कोरोना काल में देश में जो चीज़ें होना चाहिए थी वो चीज़ें यहाँ नहीं थी। हमारे पास चाहे PP किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, सारे पड़ोसी देश हमारा जो चीन है वहाँ से आ रहा था। लेकिन इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता करते हुए हमारी जो MSME की छोटी छोटी इकाइयाँ थीं, MSME सेक्टर में जो उद्योग बंधु थे, उनके पास जाकर बात की और बात करने के बाद कोरोना काल में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन सारी चीज़ों को अपने देश में बनाने का काम किया। उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें चाहे हमारा सैनिटाइजर हो, चाहे हमारे लिए मास्क हो, अन्य जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी चीज़ों की मदद हमारे MSME सेक्टरों ने की है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे MSME सेक्टर जो काम कर रहे हैं और जो देश में करीब 6.3 करोड़ MSME सेक्टर उद्योग बंदी छोटे छोटे लगाए हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें से करीब 8,000 के करीब जो उत्पादन है वो प्रोडक्शन करते हैं। और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद हमारे देश के लोगों को अगर रोज़गार मिला है तो करीब 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश की जो GDP है उस GDP में करीब 1/3 का योगदान MSME का है, जिस MSME की हम लोग छोटी छोटी इकाइयाँ हैं काम कर रही हैं। और आज देखा जाए तो अगर एक्सपोर्ट भी जो देश में हो रहा है उसमें करीब 48% का योगदान हमारे MSME मंत्रालय, हमारी MSME छोटी छोटी इकाइयों का है। आज मैं कह सकता हूं कि आज उसी समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। उस पैकेज के माध्यम से MSME सेक्टर में जहां जो आवश्यकता पड़ी उसकी मदद की। और उसकी मदद ही नहीं की
विशेष रूप से एक पैकेज देकर उन्होंने 5 लाख करोड़ का ECL GS योजना देकर उन्होंने हमारी छोटी छोटी जो यूनिटें थी, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे, उनकी मदद की। और 5 लाख करोड़ रुपए में से आज करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गया है और ये योजना अभी इसी लास्ट महीने 31 मार्च तक के लिए लागू है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, उस पैकेज के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया है। आज हमारी जो MSME है, इन सारी चीज़ों की वजह से आज हम लोग कह सकते हैं हमारी जितनी भी MSME है उसमें 96% MSME लास्ट में लाभ में चल रही हैं। हम लोग कह सकते हैं कि आज जलवायु परिवर्तन एवं पेरिस एग्रीमेंट में भारत के प्रयास 195 देशों का बिना लीगल बाइंडिंग के एक साथ आना, भारत के प्रयास एवं प्रतिबद्धता, जो हम लोग कहते हैं ना जगत में हमारे विश्व में विविधता है, ये कि भारत विशेष रूप से इन सारी चीज़ों में बगैर एग्रीमेंट, बगैर कानूनी प्रतिबद्धता के साथ ये 195 देश मिले हैं। और उनका उदाहरण है और प्रतिबद्धता का उदाहरण है ये कि नेट जीरो इमिशन विल 2022 भारत में लाके लगभग मैं कह सकता हूँ कि आज वो स्थिति है कि हमारे यहाँ जितना भी पर्यावरण की स्थिति है उसे कम करने का काम किया है। विशेष रूप से कह सकता हूँ कि अभी आज हम लोगों ने एक पेपर में पढ़ा है कि ब्रिटेन में कुल जितनी बिजली का उत्पादन होता है उतना उत्पादन केवल हमारा सौर ऊर्जा उत्पादन देश उत्पादन कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि विशेष रूप से देश आगे प्रगति कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर वो आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि और आस पड़ोस के देशों को भी मदद करता है। कोरोना काल में तो उसने करीब 100 से ज़्यादा देशों को अपनी PP किट और सारी चीज़ें देकर उन लोगों की मदद करने का काम किया है। आज वही हमारा MSME जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट योजना के पर्यावरण जो हमारा अनुकूलता है एवं गुणवत्ता सहित उत्पादन का उत्पादन करने के लिए जो भी हमारा MSME है, जो भी उद्योग हैं, वो एक्सपोर्ट करने के लिए गुणवत्ता से परिपूर्ण अगर उत्पादन करेंगे तो निश्चित ही वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल ले जाके विदेश में बेचेंगे। इसी तरीके से गुणवत्ता लाने के लिए लीन स्कीम का भी हम लोगों ने अभी उसे पेश किया है। चीन का उदाहरण है, आप सब जानते हैं कि माल वहाँ बहुत बनता है, इतना बनता है कि वो जरूर से ज़्यादा बनता है। और आप यहाँ चीन का उदाहरण हम लोग आप सब लोग यहाँ से माल लेके आते हैं, हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें, चीन से माल मिलता है लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं है। क्वांटिटी तो है उनकी लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इसलिए नहीं है कि हम लोग जिस माल को लेते हैं उस माल को हम लोगों को पता लगता है कि कोई समझ लीजिए घड़ी को हमने लोगों ने ले लिया और घड़ी को लगा के देखा तो अगर वो कहो 2 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, कहो तो 24 घंटे भी नहीं चले। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उनकी जो क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। लेकिन भारत में जो सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से भारत चाहता है कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी हमारी बढ़े और अच्छी क्वांटिटी बढ़ने के साथ तभी क्वालिटी होगी, तभी क्वांटिटी बढ़ सकती है। विशेष रूप से हमने कह सकते हैं कि आज भारत प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हमारे पर्यावरण को अनुकूल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था। जिस समय स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया उस समय लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि देश के उसी प्रधानमंत्री झाड़ू लेके रोडों को साफ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका ध्येय ये था कि किसी तरीके से हमारे देश में सफाई रहे, अनुकूलता रहे, हमारी जो फैक्ट्रियाँ हों उनमें उत्पादन अच्छा हो और पर्यावरण कम हो, बिल्कुल जीरो हो, तभी हमारी फैक्ट्रियाँ आगे बढ़ सकती हैं, तभी एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है। अभी हम सब लोगों ने देखा है कि इस तरीके से टर्की में एक भयानक भूकंप आया, उसमें कितने लोग उसमें दब गए, कितने लोगों की मौत हो गई, करीब 50,000 लोग उसमें उस भूकंप के कारण उस बिल्डिंग के नीचे दबकर मौत हो गई। लेकिन देश के ऐसे प्रधानमंत्री ने सिर्फ इसकी चिंता इसलिए की क्योंकि उनके लिए भारतवर्ष ही नहीं, उनके लिए विश्व एक परिवार है और वो परिवार की चिंता करते हुए उन्होंने अपने यहाँ से NDRF टीम भेजी और NDRF टीम ने वहाँ जाके वहाँ लोगों को जो सुविधा दे सकते थे, उनकी जान बचा सकते थे, जान बचाने का काम किया। किस तरीके से आपने देखा हमारे देश की
एनडीआरएफ टीम में एक महिला जो गई थी, उन्होंने किस तरीके से बिलखते हुए बच्चे को अपने सीने से लगाया। जब विश्व ने ये देखा तब उसे विश्व को लगा कि भारत देश देखिए महान कितना देश है कि वहाँ की महिलाएं जिस टर्की में आई हैं, बच्चों को बचाने के लिए आई हैं, उन्हें अपने सीने से लगा के उनको सांत्वना देने का काम कर रही हैं। विशेष रूप से जब हम लोगों ने उस महिला के बारे में पता लगाया तो भारतवर्ष में वो रहने वाली महिला, वो हमें विश्व में भारतवर्ष का नाम तो कमाई है, साथ ही साथ वो रहने वाली कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश में भी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन की रहने वाली थी, जहाँ से मैं सांसद बनता हूँ। और सांसद बनता हूँ, साथ में जालौन के साथ साथ हमारा कोंच एक टाउन एरिया है, टाउन एरिया की वो बच्ची रहने वाली थी और वो अग्रवाल परिवार की थी, जिसने ये काम विश्व में करके दिखाया है कि देखिए भारत हमारा एक परिवार है, यहाँ के बच्चे भी हमारे हैं, सीने से लगाकर उन्हें सांत्वना देने का काम किया था। आज हम सब लोग समझ सकते हैं किस तरीके से हम सब लोग देखते हैं। अभी एक साल पहले से रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हुआ और किस तरीके से हमारे बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ बच्चे वहाँ से नहीं निकल पाए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात करके 8 घंटे का युद्ध विराम कराने का काम किया। उससे बच्चे निकल के आए। वो हमारे देश के ही बच्चे निकल के नहीं आए, भारत के भी नहीं आए, बल्कि विश्व के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे वो निकल के आए। और विश्व के साथ साथ पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वहाँ के भी बच्चे निकल के आए, वो भी उस युद्ध विराम में निकल के आए। तो हम समझ सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने पूरे विश्व को अपना परिवार समझकर वो काम करते हैं जिससे विश्व की मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं। वो तो पड़ोसी देश की मदद कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश को देखिए कभी कभार हम लोग के सामने आता है कि वहाँ से आतंकवादी भेज के यहाँ जिन बच्चों को हमने वहाँ के बच्चों को बचाने का काम किया है, लेकिन आतंकवादी यहाँ आके निर्दोष बच्चों की जान ले लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से देश हमारा आगे प्रगति कर रहा है और आगे काम कर रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि अभी पाकिस्तान में आए दिन हम लोग टीवी के माध्यम से देखते हैं, टीवी के माध्यम से किस तरीके से पाकिस्तान के लोग कहते हैं काश हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें भी मिल गया होता तो शायद आज हमारी जो किल्लतें थी, जो सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जो आज यहाँ खाने के लिए नहीं है, कुछ हम लोग दर दर भटक रहे हैं, तो शायद दर दर न भटकना होता। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी MSME मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम के साथ साथ हमारे देश को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग तो एक साथ मिलकर एक साथ विश्व शांति और उन्नति के लिए काम करने का आह्वान करते, यहाँ से बहुत लोग विदेश से लोग आए हैं। निश्चित भारतवर्ष आप सब लोगों के साथ मिलकर इस उद्योग जगत में आगे बढ़ना चाहता है और मैं चाहता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग भी आगे बढ़कर अपने अच्छी सी प्रोडक्ट्स करके निश्चित भारत में आयात करें। और भारत के उद्यमियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा MSME जो छोटी छोटी हमारी सेक्टर्स हैं और हमारे जो उद्योग बंधु हैं वो भी अच्छा प्रोडक्ट बना के, जरूरी नहीं कि उनकी क्वांटिटी अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी ना हो, सिर्फ क्वालिटी अच्छी हो। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो निश्चित ही आपका ये निर्यात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। NSIC is surging ahead with the vision of Government of India towards Make in India, Digital India and Skill India by the way of aiding, promoting and fostering MSMEs. NSIC is continuously strengthening MSMEs for more than 6 decades by providing marketing, technology, credit and other support services. It gives me immense pleasure to participate in the inaugural plenary of the 3rd edition of International SME Convention 2023. I understand that this edition of the convention is aimed at boosting bilateral trade and forging new partnerships. MSMEs can benefit greatly from collaborations with international counterparts in terms of access to new markets, technologies and knowledge.
Successful collaboration between Indian and international MSMEs can contribute significantly to the growth and competitiveness of the Indian MSME sector. I am glad that the focus of this convention is on cutting-edge technology of MSMEs. I have noticed that the technical sessions comprehensively cover each aspect required for Indian MSMEs to scale up their operations and become more efficient. Subjects such as clean tech, building sustainable ecosystem for MSMEs, and plugging SMEs into the global value chains are not only topical but extremely relevant for Indian MSMEs. It's extremely important to learn from experiences and adopt best practices. In recent times, Indian MSMEs have shown strong resilience despite the pandemic. We in the government have tried to address issues affecting the MSMEs so that they can quickly put back. So they are quickly put back on the growth trajectory. GST collections from MSMEs do so. There is a recovery, and the GST figures of 22-23 are higher than the pre-pandemic levels. The daily registration on Udyam registration portal have more than 30,000 in recent weeks, and I'm glad to share with you that we have now more than 1.63 crore registered enterprises with an employment of 10.73 crore. Those nano enterprises which do not have PAN cards have also been brought under the formal MSME ambit. On 11 January 23, together with SIDBI, the Ministry of MSME has launched the formalization project, and since then 13.33 lakh informal micro enterprises have been recognized as MSMEs to avail the benefit of priority sector lending. We are working closely with other ministries, departments, state governments, SIDBI, CGTMS, CGM, industries associations, other stakeholders to provide an enabling environment to the MSMEs. Such an environment consists of elements such as access to credit, low cost of finance, equity infusion, technology upgradation, access to green technology, enhanced procurement, domestic and international market access, information dissemination. We are working towards providing a comprehensive and coordinated response to the issues faced by MSME sectors. I am confident that together with the stakeholders, we can continue to work for the promotion and development of the sector. NSIC is surging ahead with the vision of Government of India towards Make in India, Digital India and Skill India by the way of aiding, promoting and fostering MSMEs. NSIC is continuously strengthening MSMEs for more than 6 decades by providing marketing, technology, credit and other support services. I would like to welcome all the honorable dignitaries on the dais. For lack of time, I will not be addressing each of them by name. But Government of India, Ministry of MSME warmly welcome, especially the foreign dignitaries who had been part of this third edition of the MSME Convention. Last night we got to know that there are 51 countries participating, and we have more than 1,700 who have registered for this. And today, since morning, we have been having several technical sessions. It's been very encouraging, informative, and also a wonderful time of networking, getting to know each other. And so I'm sure all of you have been enriched greatly, and you have found some good partners with whom you can partner together and carry forward whatever is possible for collaboration in the MSME sector. If you look at the MSME landscape, it's the same story for everybody, because MSME contributes significantly in our GDP, in our manufacturing output, and also exports. And it also helps in generating employment. And so it's a very important segment of our economy. And the range of MSME, if you talk about, it's very vast. It starts with the artisans who create with their hands or with a basic tool, up to products that are made with very high precision technology. And it is multi-sectorial, and so you have a lot of sectors that you can network together. Government of India,
to address the ease of doing business, have been making efforts to address all the bottlenecks and also address some of the critical gaps that we observed. And so one of them is revising the definition of the MSMEs. And also in 2021, we announced the inclusion of the retailers and traders also within the MSME to enable them access to credit and other supports. Also, Government of India has announced the public procurement policy, and it mandates that 25% of all the procurement must mandatorily be from the MSMEs, out of which 4% must be from the SCs and STs. These address the inclusive growth, and also 3% from women. And some of the important steps that we have taken is the Udyam registration. We introduced in 2020, and till date, we have more than 1.6 crore registered on the portal. And we also have the Samadhan portal, which is the portal that empowers MSMEs to register their delayed payments on portal for redressal. We also have the Sambandh portal, which monitors the procurement of MSMEs. And GEM, as we all know, is the government e-marketplace. And this is the online portal for procurement of goods and services by Government of India ministries, departments, CPSCs. And for helping and supporting the SCs, STs, scheduled caste and scheduled tribes and women, we have waived off the caution money to be onboarded on the GEM. Now, if you look at the Ministry of MSME, I know that many foreign delegates are here, and it may not be of great importance to you, but since many MSMEs from all regions of India are gathered today, just want to let you know that these are some of the important verticals that we work with. So Ministry of MSME, we have broadly 5 verticals which we work. One is credit facilitation, and you are aware of the Prime Minister Employment Generating Program. And so we have revised recently the maximum for the manufacturing sector from 25 lakh to now 50 lakh. Service sector has been increased from 10 lakh to 20 lakh. For the credit guarantee scheme, this scheme encourages the first generation entrepreneurs by facilitating credit guarantee support for collateral-free loan, especially in the absence of collateral, and it gives a guarantee of loan up to rupees 2 crore. The special credit-linked subsidy scheme provides the scheduled caste and the scheduled tribes to access credit up to rupees 1 crore, and out of which 25% is the subsidy component. Recently, we have also launched the Self-Reliant India Fund under the initiative of Atmanirbhar Bharat, and it is an equity infusion to the MSMEs, and it has a total corpus of rupees 50,000 crore, out of which 10,000 crore is given by the Government of India. As of now, we have 142 MSMEs, and also we have provided equity for these 142 MSMEs. Other important verticals that we work with are skill development, technology enablement, and also the forward linkage and the backward linkage, because we want our MSMEs to be in the global value chain. And so we have several initiatives for these various parts of the value chain. Also, to be manufacturing competitive, we have innovation scheme, which also has incubation, design, and RPR, and also to be conscious of the environment for the hygiene of the manufacturing unit. We have zero effect and zero defect scheme, and we also have launched lean scheme very, very recently. Now, in order to also improve access to market and also credit and strengthen the existing institutions, and also to improve the center and the state partnership, we have also launched the RAMP scheme, which is assisted by the World Bank. And so in 5 years, the objective is to benefit more than 5.5 lakh, and we hope that this will really help. And today we are very happy that Madhya Pradesh and Uttar Pradesh has come on board for this 3rd edition of the SME Convention. I just want to also highlight what is the vision of the MSME that we are working towards.
we are hoping that all the MSMEs will be brought under the formal sector, because a whole lot of MSME units are still outside the formal sector. So we are trying through the UDIAM registration and carrying out all kinds of campaign awareness programs so that they get registered on the portal. That will give us the credible data and also help them access the various supports that Government of India is giving. We also hope that we will be able to enhance technology outreach to all the districts and also create a sustainable and globally competitive village industries. We also want to enhance the service sector through capacity building and also work towards the gender parity. We hope that by 2047, at least women will become 50%. So we are working towards that. And under the Z scheme, we give 10% subsidy in addition to others, and also in the CGT MSE also we are giving 10% concession to annual guarantee fee and 10% additional guarantee coverage for women. And also we would like to ensure access to market and hence MSME share of exports. So we would request all of you, especially the Indian MSMEs who are participating here, to visit our website, follow us because we are very active on the social media platforms, and also be a part of us. Let us work together so that we can develop the MSMEs. And I hope that you will be greatly enriched by participating in this third edition of the International SME Convention. Our gratitude goes to the Indian SME Forum for organizing this wonderful get-together. And I hope that you will go back with good memories and also to handhold each other so that everybody is in a win-win situation. Thank you and Jai Hind. NSIC is surging ahead with the vision of Government of India towards Make in India, Digital India and Skill India by the way of aiding, promoting and fostering MSMEs. NSIC is continuously strengthening MSMEs for more than 6 decades by providing marketing, technology, credit and other support services.